Hello students, welcome to my channel. In this video series I am discussing NCERT solutions, exercise solutions. So in this video I am going to discuss exercise 2.2 question number 1 to 10. This is my live class schedule. Please do join and please share with others. Coming to the first questions. So in these questions what is saying here ki prove the following, this LHS is equal to RHS we need to prove. So let's take the RHS. This is equal to sine inverse 3x minus 4x cube. So let x is equal to sine theta. Okay. So it will be sine inverse 3 sine theta minus 4 sine cube theta. This we know the formula for sine 3 theta. Sine 3 theta की फॉर्मूला क्या होती है? 3 sin theta माइनस 4 sin क्यूब थीटा. तो ये क्या हो जाएगा? sin 3 थीटा. तो sin इनवर्स, ये भी हमें पता है कि sin इनवर्स ऑफ sin x इज इक्वल टू x. ठीक है, तो दिस इक्वल टू 3 थीटा. अब देखो x इज इक्वल टू साइन थीटा है, यहाँ से क्या आएगा? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. तो दिस इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x. ओके, तो LHS प्रूफ हो गया है. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड. नाउ आई होप you all have understood these questions. I'm moving to the next question. Next question is also same thing. We need to prove the left hand side is equal to right hand side. So again we will take the right hand side. So this equal to cos inverse 4x cube minus 3x. To put x is equal to cos theta. Okay. So here it will be cos inverse 4 cos cube theta minus 3 cos theta. Okay. तो cos 3 थीटा की फॉर्मूला क्या होती है? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. तो हियर इट विल बी cos इनवर्स ऑफ cos 3 थीटा. सो दिस इज इक्वल टू 3 थीटा. सिंस cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x. अब देखो x इक्वल टू cos थीटा था, यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आएगा? cos इनवर्स x. तो दिस इज इक्वल टू 3 cos inverse x. So this equal to left hand side. I hope it's clear to you all. I am moving to the next question. Here it is prove the following. This tan inverse 2 by 11 plus tan inverse 7 by 24 is equal to tan inverse 1 by 2. तो हम लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है. ओके, we know the formula tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y divided by 1 minus xy. तो यहाँ पे वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. x plus y 2 by 11 plus 7 by 24, 1 minus 2 by 11 into 7 by 24. तो अब देखो tan inverse is equal tan inverse of 11 and 24. एलसीएम करते हैं 48 प्लस 77 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 बाई 11 इंटू 12. तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 48 प्लस 77 इट विल बी 125 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 11 एंड नीचे क्या है देखो 11 इंटू 12. 11 इंटू 12 मीन्स 132 माइनस 7 बाई 11 इंटू 12. तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 124 divided by 24 into 11 into 11 into 12 divided by 125. सॉरी यहाँ पे तो 125 था, या 125. तो ये कैंसिल, 11 भी कैंसिल, 1 by 2. तो tan इनवर्स 1 by 2. तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो हेंस प्रूव्ड. I hope this clear to you all. Now moving to the next question. These questions are very important in these exercises.
So again the same thing. First here two formulas we need to apply. We know the formula 2 tan inverse x is equal to tan inverse 2x divided by 1 minus x square. तो 2 tan inverse 1 by 2 क्या हो जाएगा? tan inverse 2 into 1 by 2 divided by 1 minus 1 by 4. So this is equal to tan inverse 1 upon 3 by 4. This is equal to tan inverse 4 by 3. Okay. So 2 tan inverse 1 by 2 plus tan inverse 1 by 7 is equal to क्या हो जाएगा? tan inverse 4 by 3 plus tan inverse 1 by 7. तो this equal to tan inverse, देखो फॉर्मूला tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y divided by 1 minus xy. तो 4 by 3 plus 1 by 7 divided by 1 minus 4 by 3 into 1 by 7. Okay. So tan inverse 28 plus 12 divided by 21. इधर 21 minus 4 divided by 21. So tan inverse 40 divided by 21 into 21 divided by 15. 16, 17, 18, 19, 20, 17. 18, 19, 20, 21. Yes. So I think it's 17. So just a minute. I think I did a calculation mistake. Yeah. 28 plus 3. Oh, I have calculated here 4 into 3, but it is 3 only. So 3, 31. It's 31. Divided by 21 into 21 divided by 7. So tan inverse of 31 by 17. This is equal to left hand side, right hand side. So hence proved. Okay. So these are the very simple questions. You just need to put the formula. That's it. Now moving to the question number 5. So here it is saying that write the following functions in the simplest form. तो हमें इसको simplify करनी है basically. तो देखो tan inverse square root of 1 plus x square minus 1 divided by x. तो this is equal to tan inverse. हम पुट करते हैं x is equal to tan theta because we know the 1 plus tan square theta is equal to secant square theta. So here it will be square root of 1 plus tan square theta minus 1 divided by tan theta. तो tan inverse of secant theta minus 1 divided by tan theta. So we'll convert in terms of sin cos. So tan inverse 1 by cos theta minus 1 divided by sin theta by cos theta. So this is equal to tan inverse 1 minus cos theta by sin theta. Okay. So this is equal to formula half angle की formula. तो 1 minus cos theta means 2 sin square theta by 2 and divided by half angle formula 2 sin theta by 2 cos theta by 2. तो ये cancel हो जाएगा. तो tan inverse sin theta by 2 by cos theta by 2. So this is equal to tan inverse of tan theta by 2. So this is equal to theta by 2. So answer is theta by 2. तो अब देखो इसको मान लेते हैं कि y. तो therefore y is equal to क्या आया है? थीटा by 2. तो थीटा इक्वल टू क्या था? tan inverse x हाफ इंटू tan inverse x. ये हो गया हमारा simplest form. So I hope it's clear. Now moving to the next question. Here also we need to simplify this thing. Again we'll put here x is equal to secant theta because secant square theta minus 1 is equal to tan square theta. So tan inverse 1 upon square root of x square minus 1 is equal to tan inverse 1 upon square root of secant square theta minus 1. Okay. So this is equal to tan inverse 1 upon square root of tan square theta. So this is equal to tan inverse 1 upon tan theta. So tan inverse of cot theta. Cot theta means it will be tan of pi by 2 minus theta, right? So tan inverse of tan of
π/2 minus theta. Hence it will be π/2 minus theta. अब देखो थीटा इज secant inverse x, π/2 minus secant inverse of x. तो here is the simplest form. इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आया है, π/2 minus secant inverse of x. Now moving to the question number 7. So in these questions again we need to simplify. So I am taking this as y. So tan inverse square root of 1 minus cos x by 1 plus cos x. तो formula 1 minus cos x is equal to 2 sin squared x by 2. 1 plus cos x is equal to 2 cos squared x by 2. Okay, these are the formulas. इधर tan inverse square root of 2 sin square theta by 2 divided by 2 cos square theta by 2. So here it will be tan inverse of tan theta by 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर sin square theta by tan theta by 2 by tan square theta by 2. ओके, सॉरी इधर x था, मैंने थीटा लिखती हूँ, तो वेरिएबल x होगा, x by 2, ये भी x by 2. तो दिस इज इक्वल टू आंसर इज x by 2. तो ये हो गया हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम थिंग वी नीड टू डू. सो tan इनवर्स cos x minus sin x divided by cos x plus sin x. So what we'll do basically, we'll divide by cos x both numerator and denominator. So 1 minus tan x divided by 1 plus tan x, dividing numerator and denominator by cos x. Numerator and denominator by cos x. Okay, so here what it will be, tan π/4 minus tan x divided by 1 plus tan π/4 into tan x, because we know that tan π/4 is equal to 1. तो tan of a plus b की फॉर्मूला क्या होती है, tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b. तो here it will be tan inverse tan of π/4 minus x. तो a माइनस के लिए यहाँ पे प्लस एंड माइनस. ओके, तो हियर इट विल बी π/4 माइनस x. तो ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म. अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9. सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज सेइंग कि सिंप्लीफिकेशन ओनली. तो देखो tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो हम x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a साइन थीटा और a कॉस थीटा. ओके, तो tan इनवर्स a साइन थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स a साइन थीटा बाय a कॉस थीटा, because 1 minus sin square theta is equal to cos square theta. तो tan inverse of a कैंसिल हो जाएगा, tan theta. So this is equal to theta. So theta means from here what will be, x by a equal to sin theta. तो theta is equal to sin inverse of x by a. So I hope it's also clear to everyone. Now moving to the last questions of this video. So here it is saying कि tan inverse of 3a square. Okay, तो tan inverse of 3a square x minus x cube divided by a cube minus 3ax square. Again simplification. तो x is equal to, will put here a tan theta. तो tan inverse 3a cube tan theta minus a cube tan theta, tan cube theta. Okay, and in denominator a cube minus 3a cube tan square theta. Okay, तो a cube कैंसिल हो जाएगा, तो 3 tan theta minus tan cube theta divided by 1 minus 3 tan square theta. Okay, तो tan 3x की फॉर्मूला क्या होती है,
3 tan x minus tan cube x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो ये भी tan 3 थीटा की फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा, तो दिस इज इक्वल टू 3 थीटा। तो यहाँ से क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू x बाई ए, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई ए, तो दिस इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x बाई ए। सो हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे प्रूफ करने का नहीं था, सिंप्लीफिकेशन ही करना था। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चंस। इफ एनीवन इज हैविंग एनी क्वेश्चंस, प्लीज डू मैसेज इन द कमेंट सेक्शन. This is my Teachment profile. If anyone interested for paid tuition, please do contact me over Teachment. This is my free live class schedule. Please do join and please share with others. Thank you for watching my video. Those who are new to this channel, don't forget to subscribe my channel.